Now, children, today let's start with chapter number 4, that is judiciary, right? So, judiciary solves the disputes between states and the center, right? An individual and the government. So, in dictatorial form of government and monarchical form of government, dictator or the king is the legislative, education, executive and judiciary have individual department. ठीक है, अगर आप कोई मतलब मोनार्कल गवर्नमेंट है तो वहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूटिव भी उस पे आपके होगा, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी. So in democratic country like us, we have long and written constitution. The judiciary has to solve power to interpret the constitution. If some disputes arise between center and the states or between states themselves, so what happened? Judiciary is the Supreme Court, final interpret and the guardian of constitution. Now Supreme Court. So the Supreme Court stand as the apex of judicial system in India. यहाँ पे chief justice है, 33 other judges है. Chief justice is appointed by the president. राइट अदर जजेस जो होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. किसके कंसल्टेशन पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नाउ क्वालिफिकेशंस. एक तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, राइट. ही और शी मस्ट हैज बीन द जज ऑफ द हाई कोर्ट और 2 सच कोर्ट्स इन सक्सेशन. ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट और फॉर एटलीस्ट 10 years. और ही और शी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड jurist of the country and should be an author of renowned books of law. Term of office. So once appointed judge of the Supreme Court, he remains in office till retirement. मतलब 65 years of age. Now powers and functions. First is applied jurisdiction. Means power of the court through which it can review decision of lower courts. Case brought by the appeal against decision of the High Court that required interpretation of the Constitution. Cases that High Court certified should be tied in Supreme Court, which is the High Court challenges the lower court. Cases that required review of the Supreme Court own judge. Original jurisdiction is the certain type of cases that can originate in the Supreme Court. Dispute होता है between center and one or more state, or between center or any state, 2 or more states, or by reinforcement of fundamental. ये क्या है? गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हम गार्डियन कहते हैं, फाइनल इंटरप्रेटर है. ठीक है, अगर आपका कुछ भी वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू डिक्लेयर दैट लॉ और ऑर्डर unconstitutional. Now, advisory or consultative jurisdiction means it question of law which is opinion is of public importance. The court may report its opinion after such hearing as it thinks to be fit. Court of record. Supreme Courts keep records of all its decision. Right? A court keeps such records is called court of record. High courts, we have 20 states and 8 UT, but there can be common high court. कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है एक से ज्यादा स्टेट्स का, राइट. सो वी कैन से हाई कोर्ट इज हैव अ चीफ जस्टिस एज अ मेंबर एंड अदर जजेस. एट प्रेजेंट देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन अ कंट्री. टोटल जजेस डिपेंड करते हैं अपॉन द साइज. मतलब क्या साइज है, क्या पॉपुलेशन है स्टेट. ऑल द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. क्वालिफिकेशन सिटीजन होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए फॉर द एटलीस्ट 10 years, और हाई कोर्ट होना, हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए फॉर मोर देन 10 years. Term of office at the age of 65, removed by the office of Supreme Court. Impeachment in Parliament, right? And he can practice in Supreme Court of India also. Power applied jurisdiction means against all the types of decision made by subordinate. ये अपील करता है सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, राइट. दोनों केसेस में अपील करता है. ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या होता है? फंडामेंटल रिलेटेड और डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स ये हाई कोर्ट है, इट इज ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. इट्स जजमेंट्स आर रेफर्ड बाय ऑल द कोर्ट्स. सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन मीन्स हाई कोर्ट एक्सरसाइज सुपरवाइजरी ओवर ऑल कोर्ट्स बिलो, जितने भी इससे नीचे कोर्ट्स है उसमें. सबऑर्डिनेट कोर्ट. ऑल द स्टेट्स इन अ कंट्री आर डिवाइडेड टू डिस्ट्रिक्ट. हर एक डिस्ट्रिक्ट को हमारे पास डिफरेंट कोर्ट्स दिए हैं, राइट. ही कैन हियर civil suits, right. And additional district judge are also appointed if quantity of work is heavier and one court find it is not first. The highest district court for trying criminal cases is that of session judge. So we can say he may file an appeal at district court, and if the later fails to satisfy the party. Apart from there is the court of sub judges that tries civil cases, and you can say that we have Lok Adalat that has been established in a country for speedy justice. इसको हम पीपल्स कोर्ट कहते हैं. लोक अदालत कब होती है? द कंप्लेंट्स पुट फॉरवर्ड
their own cases without advocates. The cases are solved through एक mutual understanding. लोक अदालत में क्या होता है, एक mutual understanding से आपके केस को सॉल्व कर दिया जाता है. Function of judiciary means it resolves disputes between citizen and the government and between two state government and center and the state. Judiciary final interpreter है आपका constitution का. It has power to reject particular law passed by the parliament. It is known as judicial review. Judiciary upholds the law and enforce fundamental right. Any citizen, कोई भी citizen हो आपका country का, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है. Then we have PIL, that is public interest litigation. Although our constitution gives right to constitutional remedies, अगर आपकी fundamental right violate हो रही हैं, आप it is difficult for the person to go to court and law, it involves money. So now person can go to voluntary organization, that is PIL. Public interest litigation, under this citizen or a group of citizen or the organization, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है. And interest against particular order, the court will take up the matter if the judges find it justified. भाई वो आपका order लेगा. For example, it was due to PIL that many prisoners in Bihar who have several long terms in jail were released, and Supreme Court heard their case and filed by an advocate. So they were poor and ignorant and they have no money, तो इसलिए उनके साथ ही तो उन्होंने PIL साइड पर, right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in next class. That's all for today. Thank you.